topic is transpose of matrix. Transpose of matrix. Transpose of matrix, it means when a particular matrix is given, for example A, B, C, D, E, F, G, H, I. If I want to transpose this matrix, then I have to rotate this particular row into column. It means first row A, B, C will become first column A, B, C. First row will become first column. Second row will become second column. And third row G, H, I will become third column. Transpose of matrix, it means we have to convert rows into columns. First row ABC, first column ABC. DEF, DEF. GHI row वो हो जाएगा column GHI. Third row, third column. It is called transpose of matrix. It has two types. First, symmetric matrix. Symmetric matrix, it means when a particular matrix is given and if we transpose this matrix, then the answer will be same. दोनों matrix same ही रहेंगे. For example, -5, 6, 7, 6, 7, 1, 0, 0, 3. ये मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज क्रिएट कर रहा हूं, इट मींस फर्स्ट रो कन्वर्ट कर दूंगा फर्स्ट कॉलम में -5, 6, 7. सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम 6, 1, 0, 6, 1, 0. थर्ड रो वो हो जाएगा थर्ड कॉलम 7, 0, 3, 7, 0, 3. तो अगर कोई मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज क्रिएट कर रहे हैं और आंसर सेम आएगा, देखो जैसे कि ये मैट्रिक्स सेम है -5, 6, 7, -5, 6, 7, 6, 1, 0, 7, 0, 3, 6, 1, 0, 7, 0, 3. अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्रिएट करके मैट्रिक्स सेम आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सेकेंड टाइप इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि कोई मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसपोज मींस अगेन सेम, फर्स्ट रो वो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो -306 वो हो जाएगा सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो वो हो जाएगा थर्ड कॉलम. तो जैसे ही हमने ट्रांसपोज क्रिएट किया तो यहां पे क्या हुआ, 0, 0 +3 became -3 +8 वो हो गया -8, -3 +3 -8 +8 -6 +6 एंड +6 -6. तो कभी भी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्रिएट करने के बाद वो नंबर्स अगर ऑपोजिट हो जाते हैं, इट मींस नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन नंबर्स सेम रहेंगे 3, 8, 3, 8, 3, 6, 3, 6, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम मैट्रिक्स आ रहा था. स्क्यू सिमेट्रिक में भी नंबर्स सेम है लेकिन वो ऑपोजिट है, साइन चेंज हो रहा है, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस. Exercise 2.2, first question, A, B and C, this matrix are given. We have to prove A plus B equal to B plus A, and second one is in bracket A plus B plus C equals to A plus in bracket B plus C. I am going to solve the second one. A matrix, first of all left hand side, A plus B plus C, A matrix, that is 2, -3, 5, -4, -6, 1 plus B matrix
-1 2 2 2 0 3. These two matrices are in brackets, plus C 4 3 -1 4 -2 1. So here addition of matrix. Addition of matrix, it means first element will be added with the first element of second matrix. First element 2 plus first element of this matrix, it means -1. 2 plus -1 plus minus minus. So 2 minus 1, answer will be 1. Next, second element plus second element, -3 plus 2 minus 1. 5 plus 2, third element plus third element, 5 plus 2 7. Fourth one, -4 plus 2 -2. -6 plus 0 -6. 1 plus 3 4. Plus C matrix, 4 3 -1 4 -2 1. So again addition, 1 plus 4 5, -1 plus 3 2, 7 plus -1 plus minus 7 minus 1 6, -2 plus 4 2, -6 plus -6 minus 2 -8, 4 plus 1 5. So answer is 5 2 6 2 -8 and 5. We solved left hand side. Now right hand side equals to this one, A plus in bracket B plus C. A matrix 2 -3 5 -4 -6 1 plus in bracket B matrix -1 2 2 2 0 3 plus C matrix 4 3 -1 4 -2 1, ब्रैकेट क्लोज. ए मैट्रिक्स यहां पे सेम रहेगा, प्लस अगेन एडिशन सेम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ -1 प्लस 4 -3, सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड 2 प्लस 3 5, 2 प्लस -1 प्लस माइनस 2 -1 1, 2 plus 4 6, 0 plus -2 plus -2, 3 plus 1 4, and last step again addition, 2 plus -3, answer will be -1, -3 plus 5 2, 5, this one -1 plus 4, it will be plus 3. So 2 plus 3 5, -3 plus 5 2, 5 plus 1 6, -4 plus 6 2, -6 plus -2 -8. This plus and minus will become minus, -6 -2 -8, and last 1 plus 4 5. So here you can see this matrix and this both are the same, therefore left hand side equals to right hand side. Second sum, A and B matrix are given. Find A minus 2B plus 6I, where I is a unit matrix, or we can say identity matrix with order of 2 by 2. 2 by 2 it means there will be 2 rows and 2 columns. So here A minus 2B
plus 6i equals to A. A means A matrix 1 minus 2 5 3 minus 2 B 1 minus 3 4 minus 7 plus 6i. 6i means identity matrix. Identity matrix is 1 0 0 1. This is identity matrix. So here 1 minus 2 5 3, it will be the same, minus 2 into this matrix. 2 ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. It means 2 will be multiplied by each and every element of this particular matrix. 2 ones are 2. 2 into minus 3 minus 6. 2 fours are 8. 2 into minus 7 minus 14 plus 6 into this matrix. 6 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. 6 ones are 6 0 0 6. 6 into 0 0, 6 into 1 6. And now subtraction and addition. 1 minus 2. 1 minus 2 minus 1. Minus 1 plus 6. Minus 1 plus 6. Answer will be 5. Minus 2 minus minus. Minus minus will become plus. Minus 2 plus 6. It means 4. And 4 plus 0. 4. 5 minus 8. Minus 3. Minus 3 plus 0. Minus 3. 3 minus minus 14. Minus minus plus. So 3 plus 14 17. And 17 plus 6 23. Answer is this. Third sum. A and B matrix are given. Find matrix C such that A plus B plus C is 0 matrix. It means A plus B plus C equals to 0 matrix. 0 matrix, it means what? We have learned that 0 matrix, it means each and every element of matrix will be 0. So here 0 0 0. One more thing, the order of this two matrix A and B matrix is 3 by 3. Therefore 0 मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर रहेगा वो क्या आएगा? 3 by 3. 3 by 3 के ऑर्डर में ही हमें उसको ड्रॉ करना है. नाउ ए मैट्रिक्स 1 2 minus 3 minus 3 7 minus 8 0 minus 6 1 plus B matrix 9 minus 1 2 minus 4 2 5 4 0 minus 3 plus C. We have to find this C matrix, and here 0 0 0 0 0 0. Again addition, simple. 1 plus 9 10 2 plus minus 1 plus minus minus 2 minus 1 1 minus 3 plus 2 1 minus 3 plus 2 minus 1 minus 3 plus minus 4 minus minus plus, so it will be minus 7. 7 plus 2 9 minus 8 plus 5 minus 3 0 plus 4 4 minus 6 plus 0 minus 6 1 plus minus 3 minus 2 plus C matrix equal to 0 0 0 0 0 0. Now next step will be when this matrix will come to here right hand side, तो उसके जितने भी साइन है, जैसे कि ये पूरा मैट्रिक्स जो है वो क्या है? प्लस. कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस. तो ये मैट्रिक्स को जब हम यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस. इट मीन्स C इक्वल्स टू 0 0 0 0 0
0। सी अपने प्लेस पे ही है, लेफ्ट हैंड साइड। 0 मैट्रिक्स भी अपने प्लेस पे है, राइट हैंड साइड। ये मैट्रिक्स को वहां पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस था, वो क्या हो जाएगा अभी माइनस। 10 1 -1 -7 9 -3 4 -6 -2। now subtraction 0 -10 -10 0 -1 -1 0 minus minus 1 minus minus plus 1 0 minus minus 7 minus minus plus 7 0 minus 9 minus 9 0 minus minus 3 plus 3 0 minus 4 4 0 minus minus 6 plus 6 0 minus minus 2 plus 2. Therefore C matrix is this. Next, fourth sum. A, B and C matrix are given. Find matrix X such that 3A minus 4B plus 5X equal to C. This equation is given. So again same 3A, A matrix 1 minus 2 3 minus 5 minus 6 0 minus 4 B matrix minus 1 minus 2 4 2 1 5 plus 5 X. X matrix we have to find equal to C. 2 4 minus 1 minus 4 minus 3 6. Again same multiplication. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 5s are 15, 6s are 18, 0 minus 4, 4 multiply होगा, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 8 1 4 5s are 20 plus 5x equals to C. ये सेम रहेगा. Next subtraction 3 minus minus 4, it means plus 4, 3 plus 4 7 minus 6 minus minus 8 minus minus plus minus 6 plus 8 2 9 minus 16 minus 7 minus 15 minus 8 minus 15 minus 8 minus 23 minus 18 minus 4 minus 22 0 minus 20 minus 20 plus 5x equals to 2 4 minus 1 minus 4 minus 3 6. now 5x अपने प्लेस पे ही रहेगा. सेम ये मैट्रिक्स भी राइट हैंड साइड -1 -4 -3 6. दिस मैट्रिक्स इसको जब शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस. माइनस एलिमेंट सेम रहेंगे 7 2 -7 -23 -22 एंड -20. now 5x equals to 2 minus 7 minus 5 4 minus 2 2 minus 1 minus minus 7 minus minus plus minus 1 plus 7 6 minus 4 minus minus 23 minus minus plus, so 23 minus 4 19 minus 3 minus minus plus, so 22 minus 3 19 and last 6 minus minus 20 minus minus plus 20 plus 6 26. now x equals to, this is 5x 5 into x मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है तो जब 5 राइट हैंड साइड आएगा
तो हो जाएगा डिवाइड, और वो हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। -5/5, 2/5, 6/5, 19/5, 19/5, 26/5। यहाँ पे कट भी कर सकता है 5 and 5, so final answer will be -1, 2/5, 6/5, 19/5, 19/5, 26/5. Fifth sum, A matrix is given. Find A raised to T raised to T. Now what is this T? T means transpose. A transpose and again transpose. So in last video we have already learned transpose. What is transpose? So we have to completely rotate this matrix. It means first row will become first column and second row will become second column. So here directly A transpose equals to first row will become first column, 5, 1, -4. 3, 2, 0, second row will become second column. So it is A transpose and then again transpose. A transpose, again transpose. So again we have to rotate this particular matrix. First row will become first column. Second row, second column, 1, 2, and third row, third column. It means we can say that A transpose and again transpose of that is equal to A. देखो यही सेम क्वेश्चन जो A मैट्रिक्स दिया था वही ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज करके भी सेम आएगा. It means A transpose of transpose equal to A matrix. Seventh sum, A matrix is given and in question it is given that this matrix is a symmetric matrix. Symmetric matrix. Now what is the property of symmetric matrix? Symmetric matrix, it means when we transpose this particular matrix, then it will be the same as the given question, as the given matrix. It means A matrix और अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे that is A raised to T, A transpose, तो वो क्वेश्चन A मैट्रिक्स क्वेश्चन एंड उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो दोनों क्या रहेंगे? इक्वल, दोनों के एलिमेंट्स सेम रहेंगे. ये प्रॉपर्टी किसका है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. Therefore A equal to A transpose. A matrix 1, 3/5, A, B, -5, -7, -4, C, 0 equals to, यहाँ पे क्या करना है? उसका ट्रांसपोज. रो, फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो हो जाएगा थर्ड कॉलम. अभी ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो यहां पे ये जो थर्ड एलिमेंट है A वो इक्वल होगा थर्ड एलिमेंट के साथ. Therefore A equals to -4. Then this one, फोर्थ एलिमेंट B वो इक्वल होगा ये मैट्रिक्स के फोर्थ एलिमेंट के साथ. B equals to 3/5 एंड लास्ट C ये इक्वल होगा ये एलिमेंट के साथ दैट इज -7. 10th sum, construct the matrix A equal to Aij, order is 3/3 and state whether it is symmetric or skew symmetric. Aij equal to I minus j, it is given in the question. So order is 3/3. 3/3 it means
our matrix will be like this: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 by 3. So first we have to find A11, that is 1 minus 1, 0. A12, 1 minus 2, minus 1. A13, 1 minus 3, minus 2. As we know that 1 is I and this second number 1 is j, I, j. So I 1 and j 1, 1 minus 1, 0. Same here, 1 minus 2, minus 1 and 1 minus 3, minus 2. Next A21, 2 minus 1, 1. A22, 2 minus 2, 0. A23, 2 minus 3, minus 1. A31, 3 minus 1, 2. A32, 3 minus 2, 1. A33, 3 minus 3 equal to 0. So our matrix will be A equal to 0 minus 1 minus 2, 0 minus 1 minus 2, 1 0 minus 1, 1 0 minus 1, 2 1 0, 2 1 0. And now to check whether it is symmetric or skew symmetric, we have to find out the transpose of A matrix. A transpose equal to first row will become first column, 0 minus 1 minus 2. Second row will become second column, 1 0 minus 1. And third 2 1 0, 2 1 0, third column. So here you can see 0 0 minus 1 plus 1 minus 2 plus 2, 1 minus 1 2 minus 2. तो जब भी एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा, जब भी ट्रांसपोज करेंगे और एलिमेंट का साइन चेंज हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक. Therefore matrix A is skew symmetric matrix. Sum number 11. Two equations are given. These equations are linear equations. You can see two variables are there, x, y, x, y. So we have to solve these equations simultaneously, just like we used to solve in 10th standard. So here this is equation 1, this is equation 2. Multiplying equation 1 by 3. Equation 1 को multiply by 3 करना है. 3 3 is 9x minus 3y equal to 3 into this matrix. 3 3 are 9, 3 1s are 3 and 3 into this matrix. 9x minus 3y equals to 3 1s are 3, 3 1s are 3, minus 3 and 3. So this is third equation. Now subtracting equation 1, equation 2 and 3. Equation 2, x minus 3y equal to 0 minus 1, 0 minus 1. And third equation, 9x minus 3y equal to 3 minus 3 minus 3, 3. Subtraction means साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस विल बिकम प्लस. एंड दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या है? प्लस, तो इसका भी हो जाएगा माइनस. x minus 9x, x minus 9x
ये हो जाएगा -8x -3y प्लस 3y कैंसल मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स minus second matrix. So here we have to write like this: 0 minus 1 0 minus 1 minus 3 minus 3 minus 3 3 minus 8x equals to 0 minus 3 minus 3 minus 1 minus 3 minus plus 3 minus 1 2 0 minus 3 minus plus 3 and minus 1 minus 3 minus 4 and last step x equals to this minus 8 वहां पे जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन -8 -8 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई वहां पे जाएगा तो डिवाइड ब्रैकेट -3 2 3 -4 ये हमें मिल गया x. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. 3x minus y equals to 1 minus 1 minus 1 1. 3x, the value of x is 1 upon -8 in bracket -3 2 3 -4 minus y equals to 1 minus 1 minus 1 1. 3 ones are -3 upon 8 in bracket -3 2 3 -4 minus y equals to 1 minus 1 minus 1 1. Now -3 upon 8 multiply by -3, so answer will be 9 upon 8. -3 into -3 plus 9 upon 8. Then second -3 upon 8 into 2. -3 upon 8 into 2, it will be -3 upon 4. -3 upon 8 into 2. 2 ones are 2 fours are. Answer will be -3 upon 4. Next -3 upon 8 into 3. -9 upon 8. -3 upon 8 into -4. 3 upon 2. 4 ones are 4 twos are. 3 upon 2 minus minus plus. This matrix, when this matrix will come here, it will become -1 -1 -1 1. ये मैट्रिक्स यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है प्लस, यहाँ पे आएगा तो माइनस, एंड सेम -y it will become +y. Now subtraction. 9 upon 8 -1. 9 upon 8 -1. Cross multiplication. 9 minus 8 ones are 8 upon 8. Answer will be 1 upon 8. So here answer 1 upon 8. -3 upon 4 minus minus 1. Minus minus plus. So -3 upon 4 plus 1. Again cross multiplication. -3 4 ones are 4 upon 4. Answer will be 1 upon 4. Same -9 upon 8 minus minus plus. -9 upon 8 plus 1. -9 upon 8 plus 1. Cross multiplication. -9 plus 8 upon 8 minus 1 upon 8. And last one 3 upon 2 minus 1. It will be 1 upon 2 equal to y. Sum number 13. Equation is given. Find x and y. It is very simple. First, here the addition of two matrix. So it will be 2x plus y plus minus minus 1. Addition. First element plus first element.
Now second plus second, -1 plus 6, answer 5. 1 plus 4, 5. 3 plus 3, 6. 4y plus 0, 4y. 4 plus 3, 7. Equals to 3, 5, 5, 6, 18, 7. These two matrices are equal. It means first element equal to first, second equal to second, fifth element equal to fifth. So here first 4y equal to 18. 4y equal to 18. Y equal to 18 upon 4. 2 2s are 2 9s are. Therefore y equal to 9 upon 2. First element equal to first. Therefore 2x plus y minus 1, first element equal to first 3. 2x plus y, value of y is 9 upon 2, minus 1 equal to 3. 2x plus cross multiplication. 2 1s are 2. 9 minus 2 upon 2 equal to 3. 2x plus 7 upon 2 equal to 3. 2x equal to 3 plus 7 upon 2, वहां पे जाएगा तो minus 7 upon 2. 2x equals to, again cross multiplication, 3 2s are 6 minus 7 upon 2. 2x equal to minus 1 upon 2. x equal to 2x, 2 into x, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, वहां पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड. इट मीन्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, डिवाइड डिनोमिनेटर में जाएगा. therefore x equal to minus 1 upon 4. Sum number 14. Question is given. Find a, b, c and d. चारों वैल्यू फाइंड करना है. So again these two matrices are given. It means first element will be equal to first element of this matrix. 2a plus b equal to 2. Second equal to second. 3a minus b equal to 3. Same for third element and fourth element. So these two equations are linear equations with variable a and b. So again we have to solve simultaneously. Adding equation 1 and 2. This is first equation and this second equation. 2a plus b equal to 2. 3a minus b equal to 3. Addition, plus b minus b cancel. 2 plus 3, 5a equal to 5. A equal to 5 upon 5, 1. This value a equal to 1, we will put this value in equation 1. 2a plus b equal to 2. 2 into 1 plus b equal to 2. 2 plus b equal to 2. b equal to 2 minus 2, 0. a equal to 1, b equal to 0. Same here. c plus 2d equal to 4 and 2c minus d equal to 1. Third equation, fourth equation. First we have to multiply equation 4 by 2. So it will become 4c minus 2d equal to minus 2. Fifth equation. Now adding equation 3 and 5. c plus 2d equal to 4. 4c minus 2d equal to minus 2. Again cancel plus 2d minus 2d. 4 plus 1, 5c. 4 minus 2, 2. c equals to 2 upon 5. Put c equal to 2 upon 5 in equation 3. c plus 2d equal to 4. Value of c 2 upon 5 plus 2d equal to 4. 2d equal to 4
प्लस वहां पे शिफ्ट करेंगे तो -2/5, 2d इक्वल टू 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 - 2/5, 2d equal to 18/5, and last step d equal to, when 2 will come here right hand side, we have to divide. It means in denominator 5 into 2. Therefore d equal to 18 upon, or we can cut this 2 ones are 2 nines are, answer will be 9/5.